Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we start the next part of the 3.2, question number 2. Evaluate. We have to find the integral of these dx divided by square root of x plus a plus square root of x plus b. Every integral we denoted by capital I. How to integrate this one? We have to take the rational. We have to rationalize the value. Rationalization for multiply square root of x plus a minus square root of x plus b divided by square root of x plus a minus square root of x plus b. So what is the answer we have? As it is x plus a minus square root of x plus b divided by a square minus b square. So x plus a minus x plus b d of x, or can also be written as square root of x plus a minus square root of x plus b divided by x plus a minus x minus b d of x. X and x cancel. A minus b is there. A minus b is constant value, so we take it out common. So a minus b integral square root of x plus a minus square root of x plus b. Now there are two terms, so we apply the integration on both of these two terms. 1 over a minus b into integral of x plus a d of x minus integral of x plus b d of x. Right. Or directly you may write, but x plus a whole power 1 by 2 d of x minus integral of x plus b. Now I told you that if there is we have a formula n plus 1 plus constant of integration. So if function has a derivative in the product, so here what is the derivative of x plus a? A is a constant term, so derivative of a is 0 and derivative of x is 1. So 1 is there, likewise 1 is there. So we just add the value power x plus a power 1 plus 2 plus 1, 1 by 2 plus 1 minus x plus b power 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1 plus constant of integration. So just write the answer here. 1 b x plus a 3 by 2 minus x plus b 3 by 2 plus constant of integration. So 2 by 3 is a constant term, so we take it 3 into a minus b x plus a minus x plus b plus constant of integration. So this is the way how to integrate the term when this type of question is there. This is the radical equation, radical expression. So first of all we have to rationalize the value. Rationalization, here it is plus, so we multiply and divide by minus term. So we have square root of x plus a minus square root of x plus b and a square minus b square. So we have this one. When we open the parenthesis, this one, and separate the integral, we get the answer simply. So this is the way how to do it. I solved one or two more questions from this more part.
on this question. Question number 2, part 4. A minus 2x power 3 by 2 dx. Now again, same formula is there. What is the derivative of A? 0. Minus 2x, what is the derivative of? Derivative of minus 2x, that is minus 2. So here we need minus 2. So we let I is equal to this one, capital I. So minus 1 over 2 into A minus 2x power 3 by 2 into minus 2 d of x. So minus 2 multiply and divide. Why we are dividing and multiplying minus 2? Because here the derivative of A minus 2x is minus 2. Derivative of A is 0 and derivative of minus 2x is minus 2. That's right. So now we have the derivative here. Formula is there. Minus 1 over 2 A minus 2x 3 by 2 plus 1 3 by 2 plus 1 plus constant of integration. This is our answer. Just simplify in one step or two steps. A minus 2x power 5 by 2 divided by 5 by 2, 2 and 2 cancel, plus constant of integration. So minus 1 by 5 A minus 2x power 5 by 2 plus constant of integration. So method is same, there is no change in the method. वही मेथड है कि आपने पहले इंटीग्रेशन चेक किया, इसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. If there is no derivative, so we multiply and divide that value if there is a constant term. So उस constant minus 2 को multiply divide कर दिया तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया. Simple. So derivative when we have, so apply the formula. So A minus 2x whole power 3 by 2 plus 1 and in the denominator 3 by 2 plus 1 and this plus constant of integration. So this is the way how to integrate the terms. Fifth part I solve. Question number 2. 1 plus e power x power 3 divided by e power x d of x. Better to solve yourself, but first of all open the power parenthesis. So 1 plus e power 3x plus 3 e power x plus 3 e power 2x divided by e power x a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. We have e power minus x plus e power 2x plus 3 plus 3 into e power x by dividing this one with each term. So apply this integral for all these four terms. Integral of this one is e power minus x divided by minus 1 plus e power 2x divided by 2 plus 3 into x plus 3 e power x plus constant of integration. So this is our answer. Just write minus here. This is the important one. Next,
let I is equal to integral of sine a plus b into x dx. Before starting the exercise, this question, we know the derivative of sin x is cos x, derivative of cos x minus sin x, derivative of tan x, secant square x, and their reciprocals are also there. Derivative of cosecant is cosecant x, cot x, derivative of secant x is secant x tan x, and derivative of cot x is minus cosecant square x. That is मैं वन टू है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रल ये होगा, इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x, integral of sin x minus cos x minus, likewise integral of secant square x या इसका जो डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रल ये हो जाएगा, आपस में एंटी हैं ये. सो दिस इज द वे हाउ. अब अगर आपके पास एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास डेरिवेटिव है cos 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x into 2 means minus 2 sin 2x. इसी तरह अगर हमारे पास इंटीग्रल है sin 2x, इसका इंटीग्रल क्या होएगा, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो होगा हमारे पास माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2. सिंपल वर्डिंग में पहले हम इसका इंटीग्रल लेते हैं, वो cos आ गया माइनस cos, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, सो दैट वी राइट इन द डिनोमिनेटर. कि अब आप जब इसका इस का डेरिवेटिव लोगे माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन 2 डिवाइड बाय 2, तो आपका साइन 2x. सो ये हमारे पास मेथड होता है, और ये फॉर्मूले गिवन भी हैं, बुक में भी हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप पे किए, यू कैन चेक. सो सिंपल वर्ड लाइन आंसर दैट minus cos a plus b x divided by a plus b plus constant of derivation. So minus 1 over a plus b into cos a plus b into x plus constant of integration. So this is the integral of sin a plus b into x dx. So सबसे पहले हमने cos का लिया, that is minus cos a plus b function as it is आ जाएगा, उसका एंगल आ जाएगा. Then derivative of this one a plus b into x, that is a plus b, we write in the denominator plus constant of derivation. So this is the way how to integrate. I solve one more part from this. Let me check one. Part 9. Let I is equal to sin square x dx. Sin square dx, जब पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, साइन आ जाता है, cos आ जाता है, tan आ जाता है, डायरेक्टली होकर हमारे पास इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता. वी हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट. टू सिंप्लीफाई दिस वन, हाउ कैन 1 minus cos square, is it so? There is another way also.
ये भी, इससे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट देयर इज अनदर वे। आपके पास हाफ एंगल फार्मूला है, आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 1 माइनस cos and when we have 2 sin square x is equal to 1 minus cos 2x, ये हमारे पास है। यहाँ पर भी हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, इजी है हमारे लिए, वी हैव अ वेरी सिंपल वे, सो मीन्स वी यूज द फार्मूला इन दिस वे, टू की जरूरत नहीं है। So it means that this sin square x may 1 minus cos 2x divided by 2 d of x, or 1 by 2 d of x minus 1 by 2 cos 2x dx. So इसका डेरिवेटिव when we write 1 over 2 x minus 1 over 2, this is the derivative of sin, so sin 2x divided by 2 plus constant of integration, so 1 over 2x minus 1 by 4 sin 2x plus constant of integration। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, इनके हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करना। अब सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रल, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ क्वेश्चन secant square x dx, so directly we can write, because secant square is the derivative of tan x, so answer is tan x plus c। then likewise cosecant square उसका भी anyhow, इसका sin square cos square tan square के हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, तो इसको क्या सो इस पे हमने हाफ एंगल लगाया, बस हाफ एंगल लगाने के बाद दोनों के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई किया, दोनों टर्म्स के ऊपर, सो आपने इसको सिंप्लीफाई किया। This cos 2x is the derivative of sin 2x divided by 2, so ये हमारे पास है। This was exercise 3.2. Try to simplify this, same pattern है, same thing है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम फील हो, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी, सेम पैटर्न पे हमने यही क्वेश्चन करने हैं और यही फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।